Hey everyone, welcome back to my channel Commerce and Management Studies. So in the today's video, I have come up with this concept on how to write long answers in the examinations, right? So I have been a student also and I have been an examiner also. Generally एग्जाम्स में सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो अटेम्प्ट करने के लिए होते हैं वो होते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस. वी गेट वन स्टेटमेंट एंड वी हैव टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन फॉर 10 मार्क्स 15 मार्क्स 20 मार्क्स. इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द स्टूडेंट टू मेक सच अ लॉन्ग कॉन्टेंट. ऐसे क्वेश्चन के लिए इतना लंबा कॉन्टेंट एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के बनाना और उसे अटेम्प्ट करना, that becomes a real challenge for the students. So in this video, I'm going to tell you some basic points that you have to keep in mind, and I'm also going to show you certain questions and I'm going to show you certain answers, how to write those answers and make your answer a really extraordinary answer, or what is the difference between an average answer or an excellent answer. So let's just see. सबसे पहले कुछ basic points हैं which you have to keep in mind whenever you come across any long questions. First is number one, very important, never attempt any answer in one go. Generally students क्या करते हैं, question देखते हैं and they just start writing the answer, just like 1 2 3 4 5 6 10 points. Never do that. फॉर एग्जाम्पल जस्ट ओपन योर बुक्स, यू विल सी जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, उन्हें सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, उन्हें पैराग्राफ्स में, सब पार्ट्स में, बुलेट पॉइंट्स में डिवाइड किया गया है. सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू राइट योर आंसर ऑल्सो इन सच अ वे. ऑलवेज इंट्रोड्यूस योर आंसर. हमेशा अपने आंसर को इंट्रोड्यूस करना चाहिए बिफोर एक्चुअली जंपिंग ऑन व्हाट हैज़ बीन आस्क्ड. कभी भी ऐसा मत सोच के चलो कि ये कॉन्सेप्ट तो टीचर को पता ही है, आई एम जस्ट राइटिंग व्हाट हैज़ बीन आस्क्ड. नो, always give a brief introduction of what you are about to write, right? Make certain key points in your mind first before attempting the answer. जब भी आप कोई question पढ़ते हो, give yourself 10 seconds, 15 seconds, 20 seconds and just think what points I'm going to write. You need not to write those points anywhere, don't waste your time, but in your mind just keep these things in mind. Okay, these are the points I can use. And of course, everybody must have told you, highlight the main points, highlight the headings. Now here I like to tell one thing. Good students I have seen in the examinations, they use different pens, they use pencils to highlight, which is very good, but it is not necessary. For example, if you are a lazy writer or if you don't just want to waste your time, simply आप जिस pen से लिख रहे हो, you can highlight those main points with a pen only. That's fine. That's absolutely fine. Teacher is not looking for beautiful answer, the teacher is looking for a presentable answer. That's very very important. So highlight the main points, very very important. Now let's see certain questions which I have seen, those have come in the previous examinations, and I'm going to tell you how we are going to write the answers for them. So here are, I have taken two questions. First, it is a moral responsibility of the business to protect the environment. Discuss 10 marks. अब ये क्वेश्चन क्या है, एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है. मतलब आपको एक स्टेटमेंट दे दिया और आपको बोला है इस स्टेटमेंट को डिस्कस कीजिए इन 10 मार्क्स. वेरी डिफिकल्ट टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, विद अ गुड कंटेंट. सेकंड क्वेश्चन है, ब्रीफली डिस्कस सम इंपॉर्टेंट इश्यूज रिलेटेड टू मैनेजमेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इन इंडिया. अब यहाँ इस क्वेश्चन में आपसे कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज पूछे हैं 10 मार्क्स के. आई एम 100% श्योर इतने इश्यूज हैं ही नहीं. इफ यू आर अ वेरी आपने बहुत अच्छे से पढ़ा भी है तो भी इतने इश्यूज या 10 मार्क्स जितने इश्यूज आप नहीं लिख सकते. दैट्स प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल. सो हाउ टू अटेम्प्ट दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन जिनके हमें पता है कि इतना लंबा कंटेंट या इतना लंबा आंसर है ही नहीं. सो लेट्स सी. फर्स्ट ऑफ ऑल, नाउ ये एक ऐसा आंसर है जो 90% ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे ही लिख के आते हैं. जैसे कि इट इज़ द मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट. डिस्कस. 90% ऑफ स्टूडेंट्स आर गोइंग टू स्टार्ट द आंसर लाइक दिस, दैट येस, it is the moral responsibility of the business so and so because, and then they are going to start writing the points, point 1, point 2, point 3. I am 100% sure आप good points, जिन्हें मैं अच्छे points कहूँगी, 5 से ज़्यादा नहीं बना सकते because we actually don't have 5 से ज़्यादा arguments ही नहीं है इस statement को support करने के लिए. So you will not come up with a good content. You can fill the pages with 3-4 pages, but the content is not going to come out to be good because we don't have that much of content. So this is a completely average answer, and as an examiner, I can tell from my experience, I will not give more than 7 marks to this kind of an answer. How many pages the student has filled doesn't matter because I know the content is not up to the mark. So how to attempt these kind of questions?
First of all, let's go to the key points again. I'm just going to brief of the key points again. Never attempt the answer in one go, right? पिछले वाला answer one go में attempt कर दिया गया था. Never do that. Always introduce your answer. There was no introduction. Simply हम jump कर गए. Yes, the statement is correct. Think the answer in your mind first. How are you going to do that? Which I'm going to tell you in the next slide. And of course, highlight. You always have to highlight the main points. So what we are going to do is, अब यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन को मैंने क्वेश्चन रीराइट किया है. इट इज़ द मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट. मैंने 3 चीज़ें हाईलाइट की है. मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिजनेस और एनवायरनमेंट. 3 चीज़ें हैं जो मुझे दिख रही हैं. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़, नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन बिजनेस एंड इट्स फीचर्स. बिजनेस क्या होता है और उसके फीचर्स क्या होते हैं, जस्ट फॉर 2 मार्क्स. दिस इज समथिंग दैट आई एम गोइंग टू मेक हाइपोथेटिकली इन माई माइंड. ये कहीं पे लिखने की जरूरत नहीं है. हाउ इज द बिजनेस रिलेटेड टू एनवायरनमेंट. बिजनेस और एनवायरनमेंट के बीच में रिलेशनशिप क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट को कैसे यूज करता है. नाउ यू सीइंग हाउ मैं किस तरीके से आई एम मेकिंग अ बेस. मैं एक बेस बना रही हूँ अपने आंसर के लिए, क्योंकि मुझे बिजनेस की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बतानी है टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट. उससे पहले मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ कि बिजनेस होता क्या है और क्या बिजनेस और एनवायरनमेंट में कोई रिलेशनशिप है. सो आई एम मेकिंग अ बेस फॉर माई एक्चुअल आंसर. Then I'm going to come up to the actual answer that how can the business support the environment, कि business environment के लिए क्या कर सकता है. And then I'm going to give the concluding statement that is yes, hence I can say that this is the moral responsibility of a business to protect the environment. So you're saying I am making a picture for my answer. So if you attempt the answer like this, your answer is going to look like this. Just see. So first is, what is business, define business and the features of the business. It's a profit making entity, sale and purchase, legal activity, economic activity, whatever you want to write. And just keep in mind, ये आपको सिर्फ 2 मार्क्स का ही एक्सप्लेन करना है, बिकॉज क्वेश्चन 10 मार्क्स का है. मेजरली क्वेश्चन का फोकस है मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट. तो आपका मेजर आंसर इसी चीज को लेके होना चाहिए. फॉर अदर थिंग्स यू हैव टू कीप इट शॉर्ट. सो दिस आई एम गोइंग टू राइट फॉर जस्ट 2 मार्क्स. Like half a page or maybe 3/4 of a page is sufficient. और इतना कंटेंट तो कोई भी स्टूडेंट लिख सकता है जो पढ़ के आया है व्हाट इज अ बिजनेस एंड व्हाट आर द फीचर्स, राइट. देन आई एम गोइंग टू टेल कि बिजनेस और एनवायरनमेंट में रिलेशनशिप क्या है. लाइक बिजनेस एनवायरनमेंट से बहुत सारे रिसोर्सेज लेता है, ह्यूमन रिसोर्स लेता है, नेचुरल रिसोर्सेज लेता है. नेचुरल रिसोर्सेज में आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, एयर, वाटर, लैंड, मिनरल्स, एवरीथिंग बिजनेस यूज करते हैं एनवायरनमेंट से. सो अगेन दिस ऑल्सो यू हैव टू एक्सप्लेन फॉर लाइक 2 मार्क्स ओनली. इसमें भी बहुत इजीली आप हाफ अ पेज और 3/4 पेज का बहुत अच्छा कंटेंट पॉइंट वाइज बना सकते हो विद एग्जाम्पल्स ऑल्सो, राइट. देन आई एम गोइंग टू कम टू द मेन पार्ट ऑफ माई आंसर दैट बिजनेस कैन प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट इन द फॉलोइंग वेज. रिमेंबर आपका क्वेश्चन क्या है, इट इज़ द मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट. तो हम उसी बात को सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ से कि बिजनेस एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकता है. इसको अब हम फोकस में रखेंगे एंड वी हैव टू राइट दिस आंसर फॉर एटलीस्ट 5 मार्क्स. व्हेन आई से 5 मार्क्स इट इज़ लाइक 1.5 पेज और 2 पेज आंसर. सो इसमें हम कुछ पॉइंट्स दे सकते हैं. ट्रेन द पर्सनल, अपने ह्यूमन रिसोर्स को ट्रेन करना चाहिए, नेचुरल रिसोर्सेज को रिप्लेनिश करना चाहिए, बिजनेस को सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देना चाहिए, वेस्टेज को मिनिमम, और भी बहुत सारे पॉइंट्स विच यू कैन राइट. So this I'm going to attempt for 5 marks. I'm going to explain the points in detail. I'm going to for 1 point, I'm going to write a paragraph with examples and everything, right? And then comes my concluding statement. Hence, it is the moral responsibility of the business and all that, as they take various resources, as they are dependent on the environment, as the businesses can support the environment supports the business, it is essential for the business in the long run. बहुत सारे arguments मैं अब दे सकती हूँ. Basically, जितना मैंने आंसर अभी तक लिखा है उसको मुझे conclude करना है in half a page, which I can easily do. Again, your concluding statement is like 2 marks, right? And you can also score bonus point in this question, where how you can give examples of big organizations जो कि बहुत सारी activities कर रही हैं environment को protect करने के लिए, like Infosys, Apple, Tata, ऐसी बहुत सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं जो environment को protect करने के लिए बहुत सारे measures दे रही हैं. तो आप 2 या 3 examples easily दे सकते हो, right? Now this I will call an extraordinary answer. And minimum, as an examiner, minimum this answer deserves 9 to 10 marks out of 10, right? So this is a simple difference, between a good answer and a bad answer, like a very, very simple minimum difference, right? And this is your complete answer will look like at the end of the day. So now you understand what is the difference between the average answer, what generally students write, and what is, how an extraordinary answer looks like. See,
एक सिंपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पे भी हम इतना सारा कंटेंट बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं, एंड दैट इज हाउ योर आंसर कैन कम ब्यूटिफुली इन द एग्जामिनेशन, राइट. लेट्स गो टू द सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन मैंने दिया था आपको, ब्रीफली डिस्कस सर्टेन इंपॉर्टेंट इश्यूज रिलेटेड टू द मैनेजमेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इन इंडिया. अब आपसे इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ऑफ इंडिया को मैनेज करने में इंडिया में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं ये पूछिए, रादर देन स्ट्रेट अवे गोइंग टू द इश्यूज. ठीक है, आप बुक्स में पढ़ के आए होगे, आपको इश्यूज पता होंगे, बट रादर देन राइटिंग दोज इश्यूज स्ट्रेट अवे, नेवर डू दैट. Always frame your answer, give a picture to your answer. So how I'm going to do is, number one, define balance of payments. पहले बताइए balance of payments होता क्या है, for 2 marks where you can define it. बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को मैनेज करना क्यों ज़रूरी है, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस टू मैनेज द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स. बैलेंस ऑफ पेमेंट्स आई मीन पॉजिटिव साइड पे क्यों होना चाहिए, नेगेटिव साइड पे क्यों नहीं होना चाहिए. ऑल दिस थिंग्स यू कैन राइट अगेन इन 2 marks, क्योंकि ये मेरे आंसर का क्रक्स पॉइंट नहीं है, राइट. दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन टू माई आंसर. So I'm just going to give them a weightage of 2 marks, 2 marks only. Now the crux is problems in India. India में क्या problems आती हैं, अब ये आपको 4 to 5 marks में ही explain करना है, right? Now you can tell कि India में बहुत सारे ऐसे sectors हैं जो unregulated हैं, जो tax brackets में नहीं आते हैं, and all those things you can put up. Problems in India regarding the balance of payments, management of balance of payments, right? And then at the end, you can give some suggestions to improve the balance of payments as a concluding statements. Although आपसे इस question में वो suggestions नहीं मांगे हैं, but still as a concluding statement, just for 1 or 2 marks, I am going to give those suggestions in a very very brief way. So keep in mind, जो आपसे पूछा गया है, that is the main point of your answer. But you always have to introduce your answer. You have to make a base for your answer, introduce your answer, and then conclude your answer also. That is what makes your answer different from an average answer, right? So I hope this video has been useful to all of you. I hope the contents that I have shared from my experience as a student and as well as a teacher, ये जो experience I have faced in the examinations, I've tried to put them in the slide. I hope you understand it. I hope you like it. If you like it, do tell me in the comment section. Till then, keep learning. Thank you so much.